नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एग्जैक्टाइज टीम। मैं हूं दिवम एंड टुडे वी गोना स्टार्ट आवर 8th सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज के टॉपिक्स आपके सामने हैं। सबसे पहला टॉपिक स्पोर्ट्स से है, जिसमें प्रगन्नाधा डिफीट्स कार्टेसन 3 टाइम्स इन अ रो। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं, पिछले कुछ चंद सालों में ही यूपीएससी स्पोर्ट्स सेक्शन से भी क्वेश्चंस अब पूछने लगा है। तो स्पोर्ट्स के जो इंपॉर्टेंट वर्ल्ड अफेयर्स हो, करंट अफेयर्स हो, उनको मिस मत करिएगा। जहां तक हो सके हम कवर करवाएंगे ही। दूसरा हमारा टॉपिक गवर्नमेंट स्कीम से है, भारत ब्रांड के ऊपर है। ये क्या है, ये स्कीम क्या है, इसमें क्या चेंजेस है या फिर क्या नई चीज है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तीसरा हमारा जीएस पेपर 2 से है, इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें हम बात करेंगे फामिदा अजीम विंस पुलिट्जर प्राइज 2022। ये पुलिट्जर प्राइज क्या है, क्यों मिला है, पहले किसी को मिला है या नहीं, और अगर मिला है तो क्यों मिलता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ नंबर पर है हमारा जीएस पेपर 1 से आर्ट एंड कल्चर से अनंगताल लेक के बारे में है कि इसको मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कहा गया है, क्यों कहा गया है, ये क्या है, इसका क्या लेना देना हिस्ट्री से, हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जीएस पेपर 2 से है, इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन से, जर्मनी फ्लीट ऑफ हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, let me tell you, Germany became the number first country to use hydrogen as an train engine. ठीक है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, ये कैसे बनी है, क्या है इसका इंपॉर्टेंस। एंड मैं हमेशा आपको कहता हूँ, जहां पर भी फर्स्ट आ जाए उस करंट अफेयर को मिस नहीं करते। लास्ट हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट सेक्शन से, अर्थ गंगा न्यू मॉडल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिवर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अ सेशन विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक। प्रगनंदा डिफीट्स कार्लसन 3 टाइम्स इन अ रो। काय में डिफीट करा इन्होंने, ये चेस में डिफीट किया है, देख सकते हैं आप इस फोटो में। सो अ 16-year-old आर प्रगनंदा, इंडियाज यंग ग्रैंड मास्टर, डिफीट वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन फॉर थर्ड टाइम दिस ईयर। कैन यू इमेजिन अ लिटिल बॉय, a 16-year boy is defeating a world champion? What a talented boy he is. So ये सिर्फ आप अगर इतने सेक्शन को ही याद रख लेंगे, so it's enough for your prelims। ठीक है, बट हम थोड़ा और इसको हल्का सा डीप में पढ़ लेते हैं, so that आपको दिमाग में कहीं ना कहीं ये याद रह जाए। So first about the tournament. So the FTX Crypto Cup, the 6th event in Meltwater Champions Chess Tour, okay, takes place August 15, 21, 22 on Chess 24. Okay, the format is round robin among 8 players. Okay, who each round play a match of 4 rapid games, 15 plus 10. The winner earns $7,500, okay, एंड 3 पॉइंट्स। आप हर मैच के लिए 3 पॉइंट जीतते हैं और उसी मैच के लिए, हर मैच के लिए $7,500 भी जीतते हैं। मूविंग ऑन, इन केस ऑफ अ टाई, अगर ड्रॉ हो जाए, बराबर हो जाए, अ 2 गेम ब्लिट्ज टाई ब्रेकर इज प्लेड 5 plus 3। ठीक है, followed by an Armageddon game 5 versus 4. In that case, the winner earns $5,000 and 2 points. The loser $2,500 and 1 point. Okay, just keep this in your mind, don't write this. Okay, moving on. Now let's know something about R Pragnanda. He is a chess grandmaster of India. Okay, at the age of 16, this is important, he is considered to be chess prodigy and is fifth youngest person to have received the title of grandmaster. Now ये तो हो गई जिन्होंने जीता है, अब जिनको हराया है, let's know something about him. Magnus Carlsen, he is 5-time world chess champion and a Norwegian chess grandmaster. He has won the World Rapid Chess Championship 3 times and the World Blitz Chess Championship 5 times. Since 1st July 2011, he has been ranked first in FIDE World Chess Ranking. जैसे हमारे ICC क्रिकेट की रैंकिंग निकालता है, वैसे FIDE वर्ल्ड चेस की रैंकिंग निकालता है। ओके, रिमेंबर दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। FIDE वर्ल्ड चेस रैंकिंग कौन निकालता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये निकालता है। नाउ आवर सेकंड करंट अफेयर्स व्हिच इज फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम, ये भी बहुत आपकी पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, भारत ब्रांड वन नेशन वन फर्टिलाइजर। ओके, Ministry of Chemicals and Fertilizer launched One Nation One Fertilizer by introducing a single brand for fertilizers and logo under the fertilizer subsidy scheme named Pradhan Mantri Bharatiya Jan Rovarak Pariyojana। इसमें क्या है क्या नहीं, हम इसको आगे हम रीड करते हैं। राइट नाउ आप इस करंट अफेयर को ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट स्कीम वाली चीजें या फिर करंट अफेयर्स को नहीं छोड़ा जाता है। मूविंग ऑन,
What is One Nation One Fertilizer scheme? So under the scheme, companies are allowed to display their name, brand, logo and other relevant product information only on 1/3 space of their bag. ठीक है, मतलब अगर ये बैग है तो इसमें खाली इतना हिस्सा, इतने हिस्से में वो अपना लिख सकते हैं, लेकिन बाकी का इसमें आपको क्या लिखना होगा, ऑन रिमेनिंग 2/3 स्पेस भारत ब्रांड, मतलब यहाँ पर भारत ब्रांड लिखाएगा। एंड प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना लोगो विल हैव टू बी शोन। ओके ओके, वेरी नाइस, मूविंग ऑन। All fertilizer companies, state trading entities, and fertilizer marketing entities will be required to use a single Bharat brand for fertilizers and logo under Pradhan Mantri Yojana. Okay, PMBJP. This is not Bharatiya Janata Party wala BJP. Remember this thing. Okay. Moving on, the single brand name for P urea, DAP, MOP, NPK, etc. would be Bharat Urea या Bharat URA, Bharat DAP, DAP, Bharat MOP, MOP and Bharat NPK, etc. respectively for all fertilizer companies, state trading entities and fertilizer marketing entities. Okay, the objective of this scheme is to control black advertising by fertilizer companies and bring transparency in system. Government's argument for introducing this scheme. क्यों लाया गया ये स्कीम, क्या जरूरत थी इस स्कीम की, लोग बेच ही रहे थे, लेकिन बेचते टाइम ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी इस चीज की। अब आप बोलेंगे ब्लैक मार्केटिंग इससे कैसे रुकेगी? इससे ऐसे रुकेगी कि अब जो गवर्नमेंट वो प्रॉपरली ध्यान देगी इसके अंदर, वो प्रॉपरली अपने पास रखेंगी, वो प्रॉपरली हर चीज का, पहले भी रखती थी, भरी खाता रखेंगी, लेकिन पहले इतना नहीं था जितना अब। नाउ व्हाट इज गवर्नमेंट आर्गुमेंट, और क्या गवर्नमेंट ने बोला, देयर आर सम 26 फर्टिलाइजर्स inclusive of urea on which government bears subsidy and also effectively decides the MRP. The government is spending vast sum of money on fertilizer subsidy. The bill is likely to cross 200,000 crore in 2022-23. The government also decide where fertilizer has to be sold. ये भी गवर्नमेंट देखेगी। This is done through the Fertilizer Movement Control Order of 1973. Under this, the Department of Fertilizer draws an agreed monthly supply plan on all subsidies fertilizers in consultation with manufacturers and importers. Very good. अब आपको समझ आया होगा कि ये क्यों किया गया है। Moving on. Now, what are the significance of it? So, this will standardize fertilizers brand across the nation, irrespective of the company that manufactures it. Scheme will ensure affordable quality fertilizer of Bharat brand to the farmers. This scheme will result in reduction of cost of fertilizers and increase their availability. A single brand name will help in reduction of freight charges due to stopping of crisscross movement of fertilizer. This will help in reducing the transit time as well. See, most of the time what happens is the poor farmers don't exactly know that which fertilizer they should use, or which fertilizers is real or which fertilizer is fake, and they just purchase it on the manipulation of the shopkeeper or the person who is selling that thing. But now onwards जिन दुकानदारों से हटके और फार्मर्स को क्लियर कट समझ आएगा कि ये भारत ब्रांड है, ये सरकार ने बनाया है, इसे ले लो। ओके, मूविंग ऑन। Now our next current affair, which is from international relations, Pulitzer Prize 2022. What it is and who's she, हम पता करेंगे। Bangladesh born painter and story writer Fahimada Azim has been selected as the 2022 Pulitzer Prize. First, let us know what it is, what this prize is, Pulitzer Prize. So now, Pulitzer Prize, it is given for achievements in newspaper, magazine, musical composition, online journalism and literature annually across 22 categories. Okay, important point, वापस से पढ़िएगा ध्यान से। It was established in 1917, named in honor of the newspaper publisher Joseph Pulitzer, and is administered by Columbia University. Each winner receives a certificate and $15,000 cash.
award. The winner in the public service category is awarded a gold medal as well. Okay, अब आपको समझ आया ये क्या award है. Now let's now then read about the person who was rewarded with this. Now no, first let's read for what it is awarded for. So she is among the 4 journalists including Anthony Delcol, Josh Adams, Walt Hickey of Insider being published from New York, selected for their work on the Chinese operation of Uyghurs. ओके ये क्या है इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा. शी इज एन illustrator and storyteller. Her work centers on themes of identity, culture, and autonomy. His work has been published in many international magazines like NPR, Glamour, Scientific American, The Intercept, Vice, The New York Times. Now, आज तक भारतीय जिन्होंने ये जीता है उसके बारे में हम देख लेते हैं. तो सबसे पहले जो इंडियन थे वो थे गोविंद बेहरी लाल. ठीक है, गोविंद बेहरी लाल. तो सबसे पहले किन्होंने जीता? तो गोविंद बेहरी लाल, फर्स्ट फ्रॉम इंडिया टू विन द पुलिट्जर प्राइज फॉर जर्नलिज्म इन 1937. ही वॉज अ मेंबर ऑफ गदर पार्टी इन अमेरिका. आप गदर मूवमेंट पढ़ेंगे आपके मॉडर्न इंडिया में. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट. ओके अगर आपने मूवी सरदार उधम सिंह देखी हो तो आपको हल्का फुल्का नॉलेज होगा. मूविंग ऑन, संगमित्रा कलीटा, मैनेजिंग एडिटर ऑफ लॉस एंजलिस टाइम्स. फिर सिद्धार्थ मुखर्जी फॉर जनरल नॉन फिक्शन फॉर हिज डीमिस्टिफिकेशन ऑफ कैंसर इन द एम्पायर ऑफ ऑल मेलेडीज, अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर. देन चन्नी आनंद, मुख्तर खान एंड डार यासीन ऑफ एसोसिएटेड प्रेस वॉन द पुलिट्जर इन द फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी. ओके ये इंडियंस है. ठीक है, याद रखिएगा. सो आवर नेक्स्ट करंट अफेयर विच इज अनंगताल लेक. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इसमें से शायद या यही आ जाए आपके प्रीलिम्स में, मुझे ऐसा लग रहा है. This current affairs is from art and culture. ठीक है, now what it is, let's read about it. The Anangtal Lake in South Delhi has been declared a monument of national importance through a gazetted notification by the Ministry of Culture. Let's read more about it. So now what is the declaration? So in exercise of the powers conferred by section 4 of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act in 1958, the central government declared ancient site and remains to be national importance. Okay, we know this. Now subsection 1 of section 4 of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act. Now, in exercise of the powers conferred by subsection 1 of section 4 of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958, the central government declared the said ancient site and remains to be of national importance. Okay, very good. Let's know more about it. So, an Archaeological Sites and Remains Act 1958 defines an ancient monument as follows. ठीक है, कैसे ये बताता है आपका किस बेसिस पे डिफाइन करता है किसी भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट को. तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट मींस एनी स्ट्रक्चर. इरेक्शन मतलब कोई भी खड़ी मीनार या फिर कोई भी खड़ी बिल्डिंग, और मॉन्यूमेंट और एनी टम्बलुस और प्लेस ऑफ इंटरमेंट और एनी केव, रॉक, स्कल्पचर, इंस्क्रिप्शन और मोनोलिथ व्हिच इज ऑफ हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल और आर्टिस्टिक इंटरेस्ट and which has been in existence for not less than 100 years. मतलब 100 साल पहले होना चाहिए. 100 साल पहले क्यों नहीं चाहिए कोई भी चीज. The Union Government of India is authorized to maintain, protect and promote the monuments of national importance. So now let's read about criteria of declaration of monument of national importance. The Archaeological Survey of India declares a site as monument of national importance based on following. आपका criteria क्या criteria है? तो number 1, the remains of an ancient monument, the sites of an ancient monument, the land on which there are fences or protective covering structures for preserving the monument, land by means of which people can freely access the monument. Okay, these are the 4 criteria, 4 points. दिमाग में रख लेना, थोड़ा 2-3 बार पढ़ लेना इन्हें. Okay, moving on. अनंगताल लेक, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसको ही क्यों बनाया गया है अभी. So Anangtal is situated in north of Jogmaya temple and approximately 500 meters to northwest of Qutub complex. Very good. The lake is claimed to have been built by Tomar king Anandpal II in 1060 AD. The lake is said to have been placed a place of general resort, but now it is dried up
and used for cultivation. It is also said that Alauddin Khilji in 1296 to 1316 AD utilized the water of this tank when he built Minar and extended the Qutubul Islam Mosque. Now you will say Qutub Minar तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना स्टार्ट करी थी, जिसको एंड उनके दामाद इल्तुतमिश ने करा था. तो इसमें ऐसा क्यों? तो एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी ने एक्सटेंड किया था. Read it properly once again. Okay. Utilized the water tank when he built Minar and extended Qutub ul Islam Mosque. Okay. The city was known earlier as Dhilikapuri, as stone inscription excavation by Lord Cunningham have revealed. The millennium-old Anandpal signifies the beginning of Delhi. Anandpal has a strong Rajasthan connection as Maharaja Anandpal is known as Nana, material grandfather of Prithviraj Chauhan, whose fort Rai Pithora is on the list of ASI. Now, Anandpal II, who was he? The Anandpal II was a Tomar Dynasty king who lived in 11th century. He ruled over parts of North India that are now Haryana and Delhi. Popularly known, Anandpal Tomar was the founder of Dhilikapuri, which eventually became Delhi. Multiple inscriptions and coins suggest Anandpal Tomar was the ruler of present-day Delhi and Haryana between 8th to 12th century. He had built the city from ruins, and under his supervision, Anandtal, Bauli and Lal Kot were constructed. He is credited for having repopulated Delhi and giving it its present name, earlier known as Indraprasth. Anandpal Tomar II was succeeded by his grandson Prithviraj Chauhan. Let's know something about Tomar Dynasty. If you are a history optional student, you will read a little bit about this also. Tomar Dynasty is one of the minor early medieval ruling houses of northern India. Puranic evidences gives its early location in Himalayan region. The dynasty was one of the 36 Rajput tribes. The history of the family spans the period between reign of Anandpal and incorporation of Delhi within the Chauhan kingdom in 1164. Very nice. Okay. So our next current affair. This is the one from our international relations. Okay. So, fleet of hydrogen-powered passenger trains. Germany recently launched the world's first fleet of hydrogen-powered passenger trains to replace 15 diesel trains running on non-electrified tracks in the state of Lower Saxony. Okay, एक चीज हमेशा मैं बोलता हूँ जहां पर भी ये आ जाए, फर्स्ट 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 फर्स्ट, इसको दिमाग में याद रख लेगा. अभी आपके लिए सिर्फ इतना याद रखना जरूरी है, जर्मनी हाइड्रोजन ट्रेन. Okay, bullet point आपका. Moving on. About the new train. The new trains are equipped with a hydrogen tank and fuel cells on the roof and will produce electricity by combining water and hydrogen. This bright blue Corodia Elaine trains are built by French TGV maker Alstom, which are costlier than diesel powered trains but eco-friendly on the same time. The green trains can travel 600 miles, around 1000 km, and a maximum speed of 140 km per hour, around 87 meter per hour, on a single tank of hydrogen, similar to range of diesel train. मतलब दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, लेकिन ये eco friendly है. That's it, and that's important, not that's it. Now, what are hydrogen trains? इंडिया भी हाल फिलहाल काफी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा है. हाइड्रोजन, जैसे नितिन गडकरी जी ने अभी कुछ समय पहले कहा था, हाइड्रोजन बेस्ड कार्स, और ऐसी टेक्नोलॉजीज, ऐसे और ट्रांसपोर्टेशंस जो हाइड्रोजन बेस्ड रहेंगे, वो इन फ्यूचर हमको देखने को काफी मिलेंगे. बिकॉज लेट मी टेल यू, लिथियम इज ऑल्सो not that much left in our earth. Okay, according to some report, it is said that around 2030 only lithium will be end. ओके, जिसके बेस पे आज बैटरीज बन रही हैं, जिनके बेस पे आज कार्स चल रही हैं, आपकी बाइक्स चल रही है, वो लिथियम आयन बैटरीज ही तो हैं. सो मूविंग ऑन. Hydrogen trains are equipped with fuel cells that produce electricity by combining hydrogen with oxygen. This conversion process only emits steam and water, thus producing zero emission. Excess energy produced is stored in iron lithium batteries on board train. These trains can run around 1000 km on single tank of hydrogen, similar to range of diesel train. For this current affair, just remember what I have told you before, Germany equal to first hydrogen train. Now, what are its features? These trains also make little
very little noise. Moreover, hydrogen fuel cells have advantage over batteries. Instead of recharging, they can easily be refueled like gas or diesel engine. It is also easier to build refueling infrastructure for these trains at railway stations. These trains offer attractive prospect to many cities scrambling to combat air pollution. The only disadvantage these hydrogen trains is that they are more expensive than fossil fuel based train. ओनली डीमेरिट ये है इनका कि ये थोड़ी सी महंगी है. अगर ये महंगी है तो इनकी टिकट्स भी महंगी मिलेंगी और ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा महंगा रहेगा इन कंपैरेटिव टू योर फॉसिल फ्यूल, मतलब डीजल पेट्रोल वाली ट्रेन. सो बस यही एक इसका एक डीमेरिट था. Moving on our next current affair. This is from our environment GS paper 3, Earth Ganga new model for sustainable development of rivers. The Ministry of Jal Shakti unveiled a new initiative named Earth Ganga under the Namami Gange program. Okay, this is important in terms of your environment, और environment section से questions थोड़े बढ़ गए हैं आजकल, so ध्यान से देखिएगा. Now, what is Earth Ganga model? The Earth Ganga focuses on sustainable development on Ganga and its surrounding areas by focusing on economic activities related to the river. सीधी सी बात है, गंगा नाम से समझ आ रहा है गंगा रिवर के लिए है. At its core, the Earth Ganga model seeks to use economics to bridge people with the river. It strives to contribute at least 3% of the GDP from the Ganga basin itself. The Earth Ganga project's intervention are accordance with the India's commitments towards UN Sustainable Development Goals, which is to decrease pollution. Now, origin of it. PM Modi first introduced the concept during the first National Ganga Council meeting in Kanpur 2019. He urged for shift from Namami Gange, the union government's flagship project to clean Ganga, to the model of Earth Ganga. Okay, very nice. समझ ही आ रहा है आपको कि सबसे पहले नमामि गंगे था, उसका फिर गवर्नमेंट के और फ्लैगशिप प्रोग्राम में इसको ऐड किया गया जिसका नाम रखा गया अर्थ गंगा. Now, the 6 verticals. 1, 2, 3 and 3 in next slide. Zero budget neutral farming, that includes chemical free farmings for 10 kilometers on either side of river, generating more income per drop govardhan for farmers, monetization and refuse of sludge and water waste, that envisages reuse of treated water for irrigation. Sorry, this was also monetization and use of sludge and water waste. आपको बता दो सिंगापुर में जितना भी पोल्यूटेड पानी आता है या फिर जो सीवेज का वाटर रहता है और आप गंदगी रहती है, डस्टबिन का जितना भी कचरा रहता है, इन सब का यूज होके उस कचरे को वापस से ये लोग एज अ एनर्जी यूज करते हैं. उस कचरे को जला के उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में डेवलप करते हैं. एंड इसका कुछ हिस्सा अगर आपको इंडिया में देखना हो तो इंदौर में भी काफी इस चीज पे काम किया जा रहा है, और इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में एक सिटी है, वहां पर भी इस चीज को आप कुछ हद तक देख सकते हैं. नाउ, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जनरेशन सच एज घाट में हार्ट, promotion of local products, Ayurveda, medical plants, capacity building of volunteers like Ganga Praharis. ठीक है. Now, the 3R: public participation, cultural heritage and tourism, or institutional building. So, public participation to ensure increased synergies between stakeholders. Cultural heritage and tourism, that looks to introduce boat tourism through community jet sea, promotion of yoga, adventure tourism, etc. Ganga artists. And institutional building by enhancing local capacities for better decentralized water governance. Namami Gange program, it is an integrated conservation mission approved as a flagship program by Union government in June 2014. This was our current affairs session, our 8th current affairs session. I hope you liked it. If you liked it, please leave your comments. Please like the video. And if you have any kind of doubt, you can, as always, send me or send our team on Instagram, Telegram, or you can directly contact us on WhatsApp. See you very soon with a new video. Till then, please focus on your prelims. अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है. थोड़े टाइम आपने मेहनत कर ली तो prelims निकलेगी, थोड़े टाइम और मेहनत कर ली तो means निकलेगी, and आप बहुत जल्दी लबासना पहुंच जाएंगे. So, मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ. With that, see you all in next video. All the very best.